Hello, students of class 11. We are studying biology from NCERT book, chapter 9, Biomolecules. In that, we were studying enzymes. So today we will see the nature of enzyme action. How enzyme works. Okay. I've already explained this to you. How enzyme works. First of all, you consider this enzyme catalyzed reaction. Okay. What you are observing here, this is an enzyme catalyzed reaction. Okay. So you should consider this, that every enzyme has a specific substrate. Okay. Every enzyme has a specific substrate, substrates. Every enzyme has specific substrates. And this enzyme is having the substrate binding site present on it. Okay. Substrate is binding specifically to a site present on the enzyme. It is not binding anywhere on the enzyme. That is called active site. Okay. So enzyme has a specific substrate binding site. Okay. In its एंजाइम भी एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर बड़ा मॉलिक्यूल है, in its molecule. After this binding, enzyme substrate complex is formed. Okay. So after this enzyme substrate binding, a highly reactive enzyme substrate complex is produced. Okay. Then what happened next? When this ES complex is produced, this complex is
short lived. बहुत ही थोड़ी देर के लिए यह कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स रहता है। इसका मतलब ES is unstable, it is in high energy state, so it is short lived and due to instability and high energy state, it dissociates into product and after dissociation प्रोडक्ट के अलावा और क्या बचा? एंजाइम इटसेल्फ and the unchanged enzyme. मतलब ना ही एंजाइम की मात्रा में, ना ही एंजाइम के स्ट्रक्चर में, ना ही उसके फंक्शन में कोई परिवर्तन आया। ओके, तो प्रोडक्ट्स एंड द अनचेंज एंजाइम, स्ट्रक्चर में चेंज आया जब एंजाइम सबस्ट्रेट का बाइंडिंग हुआ, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, तो वो उस समय एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज हुई। ओके, और जब डिसोसिएट कर गया उसके बाद भी एंजाइम के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ। अनचेंज से मतलब है कि एंजाइम की मात्रा उतनी की उतनी at the end of the reaction also remains the same, और एंजाइम की फंक्शनलिटी भी सेम रहेगी। तो अनचेंज एंजाइम, फिर इसमें एक इंटरमीडिएट फॉर्मेशन है, दैट इज एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो बिफोर डिसोसिएशन हम क्या कह रहे हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज ए short lived and due to instability and high energy state, this enzyme substrate complex dissociates into unchanged enzyme and products। लेकिन साथ में एक इंटरमीडिएट स्टेज भी है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का, तो वो भी लिखेंगे एंड द अनचेंज एंजाइम विथ एन intermediate formation of enzyme product complex। So this is basically a catalytic cycle of an enzyme. This enzyme, before the start of the reaction, remains as it is at the end of the reaction. So you can say that this is an enzyme cycle. Am I right? Is this an enzyme cycle, catalytic cycle?
This is a catalytic cycle of an enzyme. At the end of the reaction, that enzyme is again available for the reaction, again available for catalyzation of the reaction. Okay? Same enzyme can catalyze another reaction. So this is the catalytic cycle of an enzyme action. Okay. What you are observing here is, I'm repeating again in a stepwise manner. First, the substrate binds to the active site. Substrate is binding to the active site of the enzyme. Okay. And thereby fitting into the active site. Okay. Substrate is fitting into the active site. The next step, this binding of enzyme and substrate is inducing the enzyme to alter its shape. And the enzyme fits more tightly around the substrate. The next, binding of the substrate induces the enzyme to alter its shape. Fitting more tightly around the substrate. Initial substrate टच अपॉन के बाद एंजाइम का स्ट्रक्चर चेंज होता है और सबस्ट्रेट को और कस के जकड़ लेता है अपने एक्टिव साइट में. अब क्या हो गया, एंजाइम और सबस्ट्रेट बोथ आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी. इनके बीच गैप नहीं है, एकदम एक दूसरे से सटे हुए हैं. ओके, आफ्टर द स्टेज 2, so the active site of the enzyme is now in the close proximity of the substrate. Now active site of the enzyme is in close proximity with किसके साथ, with the substrate. Active site of the enzyme is now
in close proximity with the substrate. This causes, इसकी वजह से breaks in chemical bonds present in the substrate of the substrate and new enzyme product complex is formed now. Then enzyme releases the product of the reaction. Because this product is not having the affinity with the enzyme, product is the changed form of substrate. This substrate was having the affinity with the enzyme. But this changed form of the substrate, that is product, is not having the affinity with the enzyme. So this EP complex is also very short-lived. As soon as the product formation occurs, this complex dissociates and product is released. समझ रही हो? Okay. As the product is not having the affinity with the enzyme, it releases product is released and the free enzyme and the free enzyme is ready to bind to another substrate molecule and can run through the catalytic cycle once again. This is about the catalytic cycle. Is it clear? Okay. Moving to the next topic within this topic, enzyme, we will study now
the factors which affect the enzyme activity. Briefly, I have discussed this before. The several factors which affect the enzymatic activity, like temperature, okay, pressure, concentration, pH. Yes. Factors affecting enzyme activity. Okay. So as you know already this, that the action of enzyme, the activity of any enzyme will also depend on the factors present in the surrounding medium. Okay. Accordingly, enzyme can do its activity. So the enzyme activity can be influenced by the change in such conditions. Okay. Enzyme activity can be altered by change in conditions. And enzyme activity is directly related to its tertiary or quaternary structure. एंजाइम एक्टिविटी में जो चेंज आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि उनके स्ट्रक्चरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं, इस वजह से आ रहा है। ओके, तो हम क्या कहेंगे कि ऐसा फिर इसलिए हो रहा है कि ये कंडीशंस जो है, एनवायरमेंटल कंडीशंस, सराउंडिंग कंडीशंस, वह प्रभाव डाल रहे हैं अपना इस प्रोटीन के स्ट्रक्चर पर, और वह प्रभाव फिर हमें फंक्शन लेवल पर, जो कि एंजाइम एक्टिविटी है, उस पर हमें देखने को मिल रही है। सो चेंज इन कंडीशंस because of this factor, change in condition, structure is changing. What are these conditions? वो कौन से कंडीशंस हैं जिनमें चेंज आने से स्ट्रक्चर में भी, प्रोटीन के स्ट्रक्चर में भी चेंज आ जा रहा है, और फिर वह चेंज हमें फंक्शनल लेवल पर भी देखने को मिल रहा है एंजाइम की एक्टिविटी। ओके, so these conditions include temperature, pH, substrate concentration, okay, or yes,
or any presence of inhibitor. Okay? हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे। ये सारे कंडीशंस में चेंज आने से कैसे एंजाइमेटिक एक्टिविटी में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। ओके, सो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स most enzymes functions at its best at a very narrow range. एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही ये ज्यादातर एंजाइम बेस्ट फंक्शन करते हैं। ओके, नैरो रेंज, और यही बात टेम्परेचर के लिए भी सही है। So most of the enzymes functions at its best at a very narrow range of temperature and pH. Book is mentioning one figure 9.5. You can see this picture, enzymatic activity versus pH. Enzymatic activity versus temperature. We have discussed this before also. You draw a graph of enzyme activity versus temperature and enzyme activity versus pH. You can observe a dumbbell shaped graph. So here you are seeing that enzyme is functioning at its best in a narrow temperature range and in a narrow pH range. Okay. Beyond that range, the enzymatic activity is decreasing sharply. Okay. आ रहा समझ में? हेलो, हम्म हम्म अभी आ रहे हैं। So you are seeing here that the enzyme is having highest activity at a particular temperature and a particular pH, which is falling in this narrow range. And this temperature and pH is called as optimum temperature of that enzyme and optimum pH of that enzyme. And the activity declines both below and above this optimum value.
At the low temperature, the enzyme remains in the inactive state. Many molecules of the enzymes remains in the inactive state. That's why the enzymatic activity is poor in the temperature below the optimum temperature. जबकि हाई टेम्परेचर पर एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो रही है क्योंकि प्रोटीन डीनेचर हो रहे हैं। पीएच में क्या हो रहा है, ऑप्टिमम पीएच से लो या हाई पीएच पर एंजाइम्स डीनेचर कर जाए। ओके, ऑप्टिमम पीएच से कम या ऑप्टिमम पीएच से ज्यादा एंजाइम active site will not remain in a functional condition. It will denature. That's why the activity is poor. Now coming to this third factor, that is substrate concentration. So enzymatic activity is also greatly dependent on the initial concentration of substrate. Okay. With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzyme, the rate of the enzyme increases. Let us see how. What I am saying is, with increase in, क्या संबंध है इसका, with the increase in substrate concentration, the velocity यानी rate of reaction of catalyzed reaction rises. Then the reaction reaches a maximum velocity. Then what happens? Reaction rises to maximum velocity. As we increase the concentration of the substrate, the velocity will increase, rate of reaction will increase as we increase the concentration of the substrate. और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रिएक्शन की वेलोसिटी मैक्सिमम हो सकती होगी। अभी आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, थोड़ा टाइम लगेगा समझने में। With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. Then the reaction ultimately reaches a maximum velocity that is called as V
max and this Vmax, the reaction rate will not exceed this Vmax. कहने का मतलब हुआ with the increase in the velocity substrate concentration, this velocity of the enzymatic reaction is rising, and you will reach a point with the increase in the substrate concentration. And beyond that point, the velocity of the reaction is not increasing. So the reaction ultimately reaches a maximum velocity. The reaction reaches to maximum velocity, which cannot be exceeded by any further rise in concentration of the substrate. हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के बढ़ाने का वेलोसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम कितना भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाए, वेलोसिटी उतनी की उतनी रहेगी। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा। यही कह रहा है थ्योरी कि हम पहले तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, फिर जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वेलोसिटी उतनी की उतनी रहेगी। ओके, तो इसका ग्राफ इज लाइक दिस। आपको ग्राफ को गौर करना होगा। ऐसा नहीं है कि हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते जाए वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी, इनफाइनाइट नो। एक पॉइंट पर आके वेलोसिटी जो है अपनी मैक्सिमम को रीच कर जाएगी। अगर आप वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ बनाए, keeping substrate concentration on x-axis and the velocity of the reaction, that is V, on y-axis, then you can observe a graph like this. Look at this graph. What you are observing here?
As you are increasing the substrate concentration, देख रही हो, the velocity is also rising. किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर यहां आप कंसीडर करो इस पॉइंट पर, तो वेलोसिटी इज दिस. कितना वेलोसिटी है, आता है ग्राफ देखने, समझती हो? अगर इस पॉइंट पर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देख रहे हैं, यानी बढ़ा दिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, देन वेलोसिटी इज दिस. कितना है वेलोसिटी? तो जैसे जैसे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. बट velocity will stop increasing after some point, and there will be no effect of increase in substrate concentration. Okay, if velocity की सीमा है, if velocity has reached its maximum, then there will be no effect of increasing the substrate concentration. Okay, क्यों ऐसा हो रहा है? नहीं पता. आप इस रिएक्शन को गौर से समझे. हाँ, यस कि नो? एंजाइम के मॉलिक्यूल्स बहुत ही थोड़ी संख्या में है एज कंपेयर टू सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स. सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन एंजाइम के कंसंट्रेशन से बहुत ही ज्यादा है. ओके, तो क्या होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट के लिए ऑफ एंजाइम के लिए, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंजाइम के लिए एंजाइम का अमाउंट फिक्स है, और सबस्ट्रेट का अमाउंट बढ़ रहा है, घट रहा है. घट रहा है यहाँ पर क्योंकि एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में परिवर्तित कर दे रहा है, तो सबस्ट्रेट का अमाउंट हर वक्त चेंज हो रहा है. तो अगर हम सबस्ट्रेट का अमाउंट को बढ़ाएंगे तो यह सबस्ट्रेट जो है इनफ है, जब उस मात्रा तक पहुंच जाएगा कि एक हर एंजाइम का एक सबस्ट्रेट का टर्नओवर रेट है, कितना टाइम लगता है उस सबस्ट्रेट को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के रूप में रहने में, और फिर तुरंत वह प्रोडक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है. तो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स जितने हैं और जितना ये टाइम टर्नओवर जो है उसका प्रोडक्शन का, यह अगर सैचुरेट हो जाए पूरी तरीके से, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद भी बहुत सारे सबस्ट्रेट बचे हुए हैं जो वेट में है कि इनका कॉम्प्लेक्स बने एंजाइम के साथ, यानी सैचुरेटेड हो गया बहुत ज्यादा सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, तब वह अवस्था आ जाएगी जब हम सबस्ट्रेट को फर्दर और इंक्रीज भी करें कंसंट्रेशन, तो वेलोसिटी पर फर्क नहीं पड़ेगा. समझे बात को? लेकिन वेलोसिटी पर फर्क पड़ेगा तब तक जब तक ये पूरी तरह सैचुरेटेड नहीं है एंजाइम, यानी एंजाइम प्रोडक्ट में बदल देने के बाद कुछ एक अमाउंट ऑफ टाइम के लिए एंजाइम खाली बैठा है अगर. ओके, ठीक है, तो वहां पर गुंजाइश है वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन बढ़ने की, जैसे हम सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाएं. यस कि नो? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स. इनकी संख्या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से बहुत कम है. एंड आफ्टर saturation of these molecules, the enzyme molecules with the substrate, there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecule. That is why it is happening like this. तो कहने का मतलब है, आप इस फिगर को देखिए,
इसका बहुत सारा मतलब है, बहुत समझने की जरूरत है। एंजाइम काइनेटिक्स है ये। इसमें तो वी मैक्स इज ए हाइपोथेटिकल मीन्स नंबर, वी मैक्स इज नेवर अचीव्ड। ओके, we can reach near to the Vmax. This is an ideal condition. क्योंकि आप पूरी तरह से सेचुरेट होने के बाद भी एकदम थोड़ी मात्रा में वेलोसिटी बढ़ेगी, इवन आफ्टर यू ऐड द सबस्ट्रेट, एक प्लेट्यू यहाँ आ जाएगा। okay? तो इस ग्राफ को आप समझिए। जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन ये ग्राफ जो कर्व है वो क्या है, पैराबोला। यानी पहले रेट ज्यादा था बढ़ने का, फिर रेट जो है रेट बढ़ने का रेट, यानी रेट का भी रेट, यह रिएक्शन रेट है, वह रेट फिर धीरे धीरे स्लो हो गया। पहले मान लो कि हम 5 सबस्ट्रेट बढ़ाते थे तो वेलोसिटी भी 5 बढ़ जाती। अब 5 बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी 3 बढ़ रही है, फिर 5 बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी 2 बढ़ रही है, 5 बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी 1 बढ़ रही है। ओके, अगर एक कांस्टेंट रेट होता है तो स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन होता, लेकिन यह स्ट्रेट लाइन फिर कर्व हो गया, यानी उस रेट के बढ़ने का रेट भी धीरे धीरे कम हो रहा है, डी एक्सिलरेशन है। और फिर उसके बाद हम इस पॉइंट के बाद, अब देखिए, लगभग हम सबस्ट्रेट का अमाउंट को कितना भी बढ़ा रहे हैं, रिएक्शन रेट ऑलमोस्ट सेम है ना। यहाँ पर भी इससे थोड़ा ज्यादा सबस्ट्रेट अमाउंट हुआ, रिएक्शन रेट इज सेम, रिएक्शन रेट इज सेम। तो Km इज ए कांस्टेंट, वी मैक्स भी कांस्टेंट है, वी मैक्स इज ए कांस्टेंट। हर एंजाइम का एक कैरेक्टरिस्टिक वी मैक्स है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर और पीएच पर। Km वैसा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जहां पर वी मैक्स का हाफ वेलोसिटी। तो अब देखिए, वी मैक्स इज दिस, हाफ ऑफ द वी मैक्स इज दिस, and corresponding to this velocity, which is half of the Vmax, the corresponding concentration is this, and this value will be called as Km. आपके बुक में सिर्फ ग्राफ दिया है। है, तुम्हारे किताब में दिया होगा, मेरे बुक में नहीं। दो दो कहाँ पर? अच्छा, यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ सब बुक में ना, इनहिबिटर से स्टार्ट हो गया, ठीक। ठीक है, क्या कह रहा है कि
how concentration, अच्छा इसी with the increase in substrate concentration, आपके बुक में लिखा हुआ है, पुराने बुक में, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. समझ गए ये? The reaction ultimately reaches a maximum velocity Vmax, which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate. ठीक है? This is because the enzyme molecules are fewer than the substrate molecules, and the saturation of and after saturation of these molecules, there are no free enzyme molecules to bind with the additional substrate molecule. ठीक है? The activity कहाँ Vmax और सेम चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। हम सोच रहे थे इस ग्राफ को एक्सप्लेन किया होगा, इस ग्राफ को एक्सप्लेन नहीं किया है और अच्छे से। लो कोई बात नहीं। ओके तो अभी आप क्या देख रहे थे? फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी में टेम्परेचर का ग्राफ आप देख लिए थे, ऐसा था, पीएच से ऐसा था, और तीसरा फैक्टर जो कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है उसका ग्राफ कैसा है? लाइक दिस, हाउ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन। ये भी वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन का ग्राफ है। For the substrate change in substrate concentration, this is the velocity graph for the change in temperature. Change in temperature तीन तरह का हो गया, याद रहेगा ये? ओके इसको थोड़ा अच्छे से समझो। फैक्टर्स substrate concentration, affecting velocity. See, any enzymatic reaction, substrate is binding with the enzyme, giving rise to enzyme substrate complex, which is giving rise to product plus enzyme, where the enzyme is unchanged, which is the catalytic cycle of the enzyme. This type of reaction for the enzyme has been described by the two scientists. Name is Michaelis and after their name, the equation has been given. Michaelis, Menten,
kinetics. Okay, this type of kinetics is called as Michaelis-Menten kinetics. और यहाँ पर this is Michaelis-Menten kinetics, where the substrate concentration is affecting the velocity. There are two components. One is Vmax, that one needs to remember, understand that it is the maximum rate of the reaction. You know it. It is the maximum rate of reaction when active sites are saturated with substrate. The second important component is this Km. If you know the Vmax, you can know the Km. This is also called as Michaelis constant. And it is defined as the substrate concentration at which the reaction rate is %50 of the Vmax. Okay. So Km is basically showing, it is a measure of affinity of an enzyme for its substrate. Okay. Because lower the value of Km, the more efficient the enzyme is at carrying out its function at lower substrate concentration. अगर Km का वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब हुआ कि उसका Vmax भी ज्यादा है. ओके. Km का वैल्यू कम है अगर, तो Vmax का वैल्यू भी कम है, यानी सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन भी कम है. कम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर यह ज्यादा रिएक्शन रेट हो जाता है इसमें. ओके. Because lower the value of Km, the more efficient the enzyme is at carrying out its function at a lower substrate concentration. So this Michaelis-Menten kinetics gives rise to Michaelis-Menten equation. You should know this. Michaelis-Menten equation. What is it? It gives the velocity of a enzyme catalyzed reaction when Vmax and initial substrate concentration is known. So velocity of the reaction is equal to Vmax multiplied by substrate concentration
वो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन जिस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर हमें वेलोसिटी प्राप्त करनी है, जाननी है। हर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन में वेलोसिटी अलग अलग होगी। V max multiplied by substrate concentration divided by Michaelis constant plus substrate concentration. Okay. So this is that. So if the substrate concentration is given to you, you can easily find it out. The velocity of the reaction, that enzyme catalyzed reaction, because these are constants. Because Km will be given to you. Km is the known value for any enzyme, and substrate concentration is given to you. You can calculate the velocity of the enzyme catalyzed reaction. Okay? याद रहेगा ये? Km समझिए. Km is that substrate concentration at which velocity of the reaction is half of the Vmax. समझी? Okay. Now coming to the fourth factor, which is affecting the enzyme activity, which is the presence or absence of other substances which interact with the active site. As you know that I have told you that enzyme interacts with specific substrates, but there are some compounds whose structures are similar to substrate and it can interact with the active site. तो सबस्ट्रेट की जगह वह कंपाउंड जिनका स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट से मिलता जुलता है वह एक्टिव साइट से इंटरैक्ट कर जाते हैं, लेकिन वो तो सबस्ट्रेट है नहीं, वह प्रोडक्ट में तब्दील होगा नहीं। तो यह जो सब्सटेंस है, जो सबस्ट्रेट की जगह ले लेता है, इसे हम क्या कहते हैं? इनहिबिटर। उसने क्या किया? सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट में बदलना स्टॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर ने एंजाइम के साथ बाइंडिंग कर ली, क्योंकि इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है, तो वो एक्टिव साइट में जाके फिट हो गया, तो ब्लॉक कर दिया उसने एक्टिव साइट को, तो यह अवरुद्ध हो गया। दैट्स व्हाई द नेम इज इनहिबिटर। ओके, so fourth factor is presence, which is affecting the enzyme active presence or absence of specific chemicals that bind to enzyme. इनकी वजह से भी एंजाइम की एक्टिविटी पर प्रभाव पड़ जाएगा। यस कि नो? And this phenomenon is called as inhibition. Okay. When binding of a chemical, it is inhibition is binding of a chemical which
sorts of enzyme activity this is inhibition, and this chemical is called as inhibitor. And why it is doing so? Because inhibitor is closely resembling resembling the structure of substrate. And because of this, it is inhibiting the activity of the enzyme. So such inhibitor, there are various types of inhibitors: competitive inhibitor, non-competitive inhibitors. So one such inhibitor is competitive inhibitor. And this competitive inhibitor is resembling the structure of the substrate. So this inhibitor is, in this case, competitive. Because it is competing for the active site based on the structure of the substrate. इसका इनहिबिटर का स्ट्रक्चर और सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, दोनों के स्ट्रक्चर में के बीच में कंपटीशन है कि एक्टिव साइट में कौन फिट होगा. जो बेस्ट फिट स्ट्रक्चर होगा वो फिट हो जाएगा. So due to its structural similarity with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the substrate binding site of the enzyme. And because of this competitive inhibition, substrate cannot bind. It replaces the substrate, this inhibitor. Because of this competition, it replaces the substrate. And therefore, after that, enzyme activity declines. Okay. One such example given in your book is inhibition of succinic dehydrogenase. Succinic dehydrogenase enzyme. यह एंजाइम क्रेब्स साइकिल में आएगा. ओके, क्रेब्स साइकिल आपके बुक में होगा आगे, उसमें आप पढ़ोगे. Succinic dehydrogenase is inhibited by malonate, which resembles the substrate succinate in structure. इसका substrate है succinate, प्रोडक्ट है मैलेट. ओके, पूरा नहीं बताया यहाँ पर, लेकिन हम बता दे रहे हैं आपको. और सक्सिनेट रिजेंबल करता है मैलोनेट से. मैलोनेट, और इसी रिएक्शन में FADH2 का फॉर्मेशन होता है from FAD+. Okay, you will study and learn in detail when Krebs cycle comes. यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत याद रखिए, एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय
competitive inhibitor malonate, which resembles the structure of its substrate, that is succinate. Okay. Using this strategy, using the strategy of competitive inhibition, we design antibiotics. Okay? एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स इनहिबिटर्स हैं बैक्टीरियल एंजाइम्स के, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। उनके सबस्ट्रेट के साथ इन एंटीबायोटिक्स की जो दवाई हो रही है उसके मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर रिजेंबल करते हैं, क्लोजली रिजेंबल करते हैं। तो यह एक तरह से कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन उत्पन्न कर रहे हैं बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरियल एंजाइम्स के लिए, जिसकी वजह से बैक्टीरियल एंजाइम्स अपने ओरिजिनल सबस्ट्रेट को छोड़ के इन इनहिबिटर्स के साथ बाइंड कर जाते हैं। इस प्रकार से बैक्टीरिया में का जो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन था वह अवरुद्ध हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हम बैक्टीरिया को एलिमिनेट कर पाते हैं अपने बॉडी से। तो दिस इज यूज्ड एज वन ऑफ द स्ट्रेटजी इन डेवलपिंग एंटीबायोटिक्स टू एलिमिनेट द पैथोजेंस, बैक्टीरियल पैथोजेंस। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक। आज खत्म कर देते हैं। कितना टाइम हुआ है? 7:04 ही हुआ है, 14 ही। थोड़ा सा बचा है, आज खत्म हो जाएगा इस चैप्टर। So we have studied the factors affecting the enzyme activity in detail, students. So now we will see the next topic under enzyme, how enzymes are named. Okay, how the enzymes are classified. Okay. Basis of classification is the reaction that they are catalyzing, the type of reaction that they are catalyzing. Okay, and why it is necessary? लिख लीजिए, classification and nomenclature of enzymes क्यों जरूरी है? बहुत सारे एंजाइम है जिसको हम कॉमन नेम से जानते हैं। जैसे हम एक एंजाइम जो बताए थे, हेक्सोकाइनेज, कॉमन नेम है इसका। अमाइलेज, सब कॉमन नेम है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, सब कॉमन नेम है। ओके, माल्टेज, सुक्रेज, सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारे एंजाइम्स हैं, हजारों एंजाइम्स हैं, उनका नाम है इस प्रकार से। लेकिन इनके नाम से स्पष्ट इंगित नहीं हो पाता है कि ये किस प्रकार का के रिएक्शन को कैटलाइज कर रहे हैं। हाँ, एक थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है, जैसे हेक्सोकाइनेज, तो इसका मतलब हुआ कि कोई हेक्सागोनल कार्बन कंपाउंड है, उसको काइनेज, काइनेज का मतलब होता है फॉस्फोराइलेशन करने वाला। तो ये हो रहा है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। ओके, एमाइलेज, एमाइलोज या एमाइलोपेक्टिन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम। तो थाउजेंड्स, हजारों तरह के एंजाइम्स डिस्कवर हो चुके हैं आज तक, डिस्कवर हो चुके हैं, आइसोलेटेड हो चुके हैं, और उन्हें हम उनके काइनेटिक्स, फंक्शन, इन सबको हम स्टडी कर चुके हैं।
तो एक प्रॉपरली इनके क्लासिफिकेशन की जरूरत थी अकॉर्डिंग टू ए सेट ऑफ रूल्स विच इज एग्रीड एंड established by the biochemists, all biochemists. उनके द्वारा एग्रीड होना चाहिए, एस्टेब्लिश, सभी लोग उस रूल को फॉलो करेंगे, तो इसकी आवश्यकता थी. So enzymes, accordingly, though this enzyme is classified into different groups based upon the type of reaction that they catalyze, classified into different groups based upon the type of reaction that they catalyze. Okay. तो पहले एंजाइम्स को 6 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया, मोटा मोटी, और फिर उसके बाद उन क्लासेज के अंदर भी फिर डिविजन्स हैं, सब क्लासेज है. जैसे एनिमल का आप किंगडम का क्लासिफिकेशन देख रहे थे, इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फाइला, फिर डिफरेंट फाइला के अंदर क्लास है, क्लास के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स हैं. तो इस तरह से एक सेट के अंदर सबसेट, फिर सबसेट के अंदर सबसेट, फिर सबसेट के अंदर सबसेट. इसी तरह से they are divided into classes and within classes, subclasses. So enzymes are divided first into 6 different classes, and each classes is having various subclasses, and these classes are further subdivided into subclasses, many subclasses, and they are named according to a 4-digit number. They are, अब हम लोग उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कैसे. They are named accordingly by a 4-digit number. आपके बुक में दिया है इन 6 डिफरेंट क्लासेस में. पहला क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस. इसका दूसरा नाम है डिहाइड्रोजिनेजेज. Very important class of enzymes. Okay. Here the enzyme catalyzed reaction is basically a oxido reduction. Basically oxido reduction reaction. Okay. So in this type of reaction, you will see oxidation and reduction is happening. Okay. Like this. There will be 2 substrates minimum.
the substrate, the reduced form of one type of substrate is reacting with the oxidized form of a different substrate. ये दोनों substrate अलग अलग हैं. Reduced form of one type of substrate is reacting with the oxidized form of another type of substrate, and it is giving rise to the oxidized form of the first substrate and the reduced form of the second substrate. कलर अलग कर दे रहे हैं जिससे आप समझने में दिक्कत ना हो. यानी यह जो रिएक्शन है वह एक तरह से कपल्ड रिएक्शन है. ऑक्सीडेशन रिडक्शन कपल्ड रिएक्शन. Now this substrate will be oxidized now. And the second substrate will be reduced. The first substrate is getting oxidized. The second substrate is getting reduced. The substrate which is reduced is oxidized. Okay, तो ये क्या हो गया? एक तरह से इस पूरे को हम प्रोडक्ट कह सकते हैं. P1 प्लस P2 लिख देते, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि P1 जो है वो बेसिकली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है रिड्यूस्ड सबस्ट्रेट का. ओके, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस अभी आप मेटाबॉलिक पाथवे में आपको देखने को मिलेंगे. ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में, क्रेब्स साइकिल में मैंने बताया था आपको Na+, हाँ, तो ये हो गया ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म. तो सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म हो गया Na+. और ये ग्लाइको पाथवे में जो इंटरमीडिएट था, ग्लाइकोलाइटिक पाथवे इंटरमीडिएट, उसको रिड्यूस्ड फॉर्म हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वह अभी उसका ऑक्सीडेशन होगा इन द नेक्स्ट स्टेप, और वो ऑक्सीडाइज हो गया. और बदले में ये ऑक्सीडाइज फॉर्म था Na+, वह NaDH प्लस H+ रिड्यूस हो गया. तो इस तरह का रिएक्शन आप बहुत देखोगे. तो वहां पर एंजाइम का नाम में आपको यह वर्ड एज ए सफिक्स के रूप में मिलेगा, डिहाइड्रोजिनेज. जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, अभी एक एग्जांपल देखे थे सबसे इसके पहले, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जब इनहिबिटर का चर्चा कर रहे थे. सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. ओके, कमिंग टू द सेकेंड ग्रुप टाइप ऑफ एंजाइम, क्या नाम है? ट्रांसफेरेजेज. सेकेंड ट्राइब ट्रांसफेरेजेज.
Here the enzyme is catalyzing the transfer of one group. Here the enzyme is catalyzing the transfer of a group. हाइड्रोजन के अलावा, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अदर देन हाइड्रोजन. Okay. Between a pair of substrates. Okay. So here what is happening? So this substrate, if this group is bound, this transferase enzyme will do transfer of this group G to the next substrate. Correct? ये आप पाओगे मेटाबॉलिक पाथवेज में, ये सब एक ग्रुप का ट्रांसफर, जैसे मिथाइलेशन रिएक्शन, अल्काइलेशन रिएक्शन, इन सब में आप पाओगे. थर्ड, क्या नाम है? हाइड्रोलेजेज. हाइड्रोलेजेज में क्या कर रहे हैं? हाइड्रोलिसिस हो रहा है, यानी ब्रेक डाउन हो रहा है. हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. ईस्टर बॉन्ड बताए थे, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा. ओके. जैसे इसका कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, यहाँ OH हो जाए तो, और ये R ग्रुप का डिसोसिएशन हो सकता है, ब्रेकडाउन यहाँ से हाइड्रोलिसिस, और इसके कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है. ऐसा डिसोसिएशन हो गया, वो कहलाएगा हाइड्रोलिसिस. तो हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, सिर्फ ईस्टर ही नहीं, आपके ईथर, ईथर हो गया, ये ईथर, पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड NH, कार्बन अल्फा, कार्बन अल्फा, याद है कि भूल गई? पेप्टाइड बॉन्ड भूल गई क्या? ये था ना पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये भी हो गया पेप्टाइड बॉन्ड. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, वेदर अल्फा और बीटा. कार्बन कार्बन बॉन्ड, हेलाइड बॉन्ड. हेलाइड बॉन्ड किसको कहते हैं? जो हेलोजन के साथ बना है कार्बन का. हेलोजन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, नहीं पढ़ी हो? हेलोजन ग्रुप, हेलाइड बॉन्ड्स.
क्लोरीन हो गया, कार्बन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड। और क्या है, और फास्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड। यानी इस तरह के जो बॉन्ड के ब्रेकेज हैं वो सब जो एंजाइम्स है उनको हम हाइड्रोलेजिस कहते हैं। अंडरस्टूड, समझिए। नेक्स्ट क्या है बताइए जल्दी जल्दी। लाएजेज। लाएजेज में भी ब्रेक डाउन होता है, लेकिन यह हाइड्रोलेजेज से अलग है। हाइड्रोलेज में जो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन के बाद कोई सिंगल बॉन्ड में, इस ब्रेक डाउन के बाद सिंगल बॉन्ड ही बचते हैं। लेकिन लाइजेज ऐसा रिमूवल है ग्रुप का जिसमें ब्रेक डाउन के बाद जो लेफ्ट ओवर केमिकल बचा उसमें डबल बॉन्ड आ जाता है। तो लाइजेज आर दोज एंजाइम्स लाइजेज क्या होगा, चौथा हो गया ना। लाइजेज, these are those enzymes that catalyze removal of groups from substrates by mechanism other than hydrolysis and thereby leaving a double bond. ओके, हाइड्रोलाइसिस में आप पढ़ रहे थे ईस्टर का ब्रेकडाउन, ईथर का ब्रेकडाउन, पेप्टाइड बॉन्ड का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का ब्रेकडाउन, एलिफेटिक चेन के कार्बन कार्बन का ब्रेकडाउन, कार्बन एलाइड, ये सारे जो बॉन्ड्स थे ये क्या कह रहा है, हाइड्रोलिसिस कह रहा है। तो इनके अलावा जो रिमूवल हो रहा है और उसके बाद डबल बॉन्ड अगर बच रहा है तो वह एंजाइम लाएजेज कहलाए। The next one is isomerases. Isomerases, these are those enzymes which catalyze the interconversion of optical, geometric or positional isomers. Isomers समझती हो? हाँ, नहीं समझती हो? आइसोमर्स कहते हैं सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। केमिकल कंपाउंड्स हैं, दो केमिकल कंपाउंड हैं, नहीं पढ़ी हो आइसोमर? दो डिफरेंट केमिकल कंपाउंड हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला सेम है बट केमिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट है।
तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? कंपाउंड आइसोमर्स। कोई एग्जांपल दे सकते हो? हम्म? ब्यूटेन का नाम सुनी है? ब्यूटेन, बताओ स्ट्रक्चर। C4, CH3 हो गया लास्ट वाला, CH2, क्या है? ब्यूटेन, है ना? क्या फॉर्मूला हो गया? केमिकल फॉर्मूला C4 और H10 हाइड्रोकार्बन में पड़ी हो ना? C और H का जितना C होगा H उसका 2 गुना +2, C4H10। और एक दूसरा कंपाउंड है, उसका भी फॉर्मूला C4H10 है, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट, CH3, CH, CH3, CH3। कितना हो गया फॉर्मूला? C4 और H कितने हैं? 3 3 9 1 10, 10 किलो। इसे हम कहते हैं आइसो ब्यूटेन। क्या है? ब्यूटेन का आइसोमर हो गया। अब समझिए आइसोमर का फर्क। ये दोनों कंपाउंड डिफरेंट है क्योंकि स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अगर हम सिर्फ फॉर्मूला देखें तो समझ लेंगे कि सेम चीज है। ओके, तो स्ट्रक्चर पर भी हमें गौर करने की जरूरत पड़ेगी। किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला उसको बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता है, सिर्फ केमिकल फॉर्मूला, उसका स्ट्रक्चर भी देखना होगा। अंडरस्टूड? तो बायोलॉजिकल इन बायोमोलिक्यूल्स के भी बहुत सारे आइसोमर्स हैं। यस कि नो? ये तो ब्यूटेन जिसमें 4 ही कार्बन है उसका एक आइसोमर बन गया। प्रोपेन का आइसोमर हो सकता है? नहीं। ठीक, तो 3 कार्बन है, उसका आइसोमर नहीं हो सकता। आइसोमर यहाँ से पॉसिबिलिटी चालू हुई 4 कार्बन से। तो हाइड्रोजन ग्लूकोज में 6 कार्बन है, कितने हैं उसके आइसोमर हो सकते हैं? बहुत सारे। तो आइसोमर्स भी कई तरह के होते हैं, आगे की कक्षाओं में आप पढ़ोगे। ओके, ऑप्टिकल आइसोमर, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमर, जियोमेट्रिक आइसोमर, और आपके एक है पोजिशनल आइसोमर। अब इस ऑप्टिमल आइसोमर के भी टाइप्स है। तो आप समझ लो अभी मोटा मोटी आइसोमर सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। अगर हम ये कहेंगे कि ये ग्लूकोज का आइसोमर है तो आप क्या समझोगे? केमिकल फॉर्मूला दोनों का सेम है, लेकिन इन दोनों ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में अंतर है। सो दोज एंजाइम्स which catalyze interconversion of optical, geometric, and positional isomers are called isomerases. They catalyze interconversion of
ऑप्टिकल और जियोमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स। सिक्स्थ, ligases, एज द नेम सजेस्ट, ये एंजाइम जो है सीलिंग का काम करते हैं, जोड़ने का। ये हाइड्रोलेजेज हाइड्रोलेजेज के ठीक उल्टा है। हाइड्रोलेजेज क्या कर रहा था? ब्रेक डाउन कर रहा था। इट इज कंबाइनिंग या कंडेंसिंग द मॉलिक्यूल्स। So ligases are those enzymes which catalyze the linking together of two compounds. Yeah. तो इन कंपाउंड्स के जुड़ने में या तो ये बॉन्ड की उत्पत्ति होगी, या कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ऑक्सीजन एक्सेट्रा, इन बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो। सो अभी तक आप देख लिए 6 तरह के एंजाइम्स हैं। नाम क्या क्या हो गए, एक बार समराइज कर लीजिए, बोलो। हाँ, 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 लाइक ऑक्सीडोरिडक्टेजेज, ट्रांसफेरेजेज, लाएजेज, हाइड्रोलेजेज। इसका एक फॉर्मूला बना लो याद रखने के लिए। ऑक्सीडोरिडक्टेजेज, ट्रांसफेरेजेज, हाइड्रोलेजेज, लाएजेज, आइसोमेरेजेज एंड लाइगेजेज। अदर लील, से याद रख लो। ऑक्सीडोरिडक्टेजेज, ट्रांसफेरेजेज, हाइड्रोलेजेज, लाएजेज, आइसोमेरेजेज एंड लाइगेजेज। Now coming to this small topic, cofactors, ये एंजाइम के अंदर ही है। So now we will see what cofactors are. What is the role of cofactors in the enzyme activity? Cofactors. What is it? As you know, that enzyme is made up of either one or several polypeptide chains. This you know. लेकिन बहुत सारे एंजाइम्स they require a non-proteinaceous constituent or part
which is attached to the enzyme to make enzyme catalytically active। कहने का मतलब हुआ this enzyme is linked with a non-proteinaceous part when this enzyme is linked to a non-proteinaceous part only, then this enzyme non-proteinaceous part complex is actually a functional enzyme। यानी catalytically active। तो फंक्शनल एंजाइम जो है उसके पास एक प्रोटीनेशियस पार्ट है जो कि पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है, और एक नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है जो कि पॉलीपेप्टाइड से नहीं बना हुआ है, लेकिन यह चाहिए तभी एंजाइम कैटालिटिकली फंक्शन होगा। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स जिनको नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट की आवश्यकता है कैटालिटिकली एक्टिव होने के लिए। ओके, एंड दिस नॉन proteinaceous part is called as cofactor। Why this is called as cofactor? Because for this reaction to happen, catalytically happen, enzyme is the factor, main factor। Okay, enzyme is called as the factor because it is the main factor। but ये main factor तब तक काम नहीं कर सकता है जब तक कि एक दूसरा पार्ट ना हो, इसलिए उसको हम कोफैक्टर कह रहे हैं। ओके सो ऐसे एंजाइम्स में दिस प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं इसे, अपो एंजाइम। ओके, एंड दिस इज द नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट इज कॉल्ड एज कोफैक्टर। अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर इज इक्वल टू functionally active enzyme। The enzyme which requires a non-proteinaceous part to function, then the enzymatic part, the proteinaceous part is called as apoenzyme. The non-proteinaceous part is called as cofactor। So this has been seen that there are three types of cofactors are found basically। तीन तरह के कोफैक्टर्स कौन कौन से? यस, prosthetic groups। These cofactors are present as prosthetic groups, or it may be present as coenzymes, or it may be present as metal ions। प्रोस्थेटिक ग्रुप का क्या मतलब हुआ? एक ऑर्गेनिक ग्रुप है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इट इज नथिंग बट एन
organic compound which is attached chemically to the compound, to the enzyme. किसी एंजाइम के प्रोटीनेशियस पार्ट से कोवैलेंटली यानी केमिकली एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड अटैच्ड बाउंड है. ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड, enzyme part is also organic compound, apoenzyme is organic compound, and cofactor is also an organic compound, or an organic compound attached to this organic apoenzyme by covalent bonds. So that is called as prosthetic group. And it is tightly bound to the apoenzyme. आपके बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, peroxidase and catalase, which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen. Here, heme is the prosthetic group and it is part of the active site of the enzyme. So this reaction is like this. It is catalyzing. It is hydrogen peroxide H2O2 को break down कर रहा है into water H2O and oxygen. The enzyme's name is peroxidase. चार चार दो चार बैलेंस हो गया. इस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप में देयर इज ए हीम ग्रुप प्रेजेंट. यही हीम ग्रुप हीमोग्लोबिन में भी है. तो हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन इज द enzyme part, apoenzyme, and heme is prosthetic group or cofactor. Okay? और यही हीम ग्रुप इसमें भी है, peroxidase में भी. हीम का स्पेलिंग आपके बुक में HAEM दिया हुआ है. हीम को हम HEME भी लिखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन अमेरिकन इंग्लिश, और ये दोनों सही है. और ये ब्रिटिश इंग्लिश में HAEME. Coenzymes are also organic compounds, but their association with the apoenzyme is only transient. This is the second type of coenzymes. This is the second type of cofactor, which is coenzymes. Which are coenzymes. इसमें क्या हो रहा है, यहां पर यह भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कोएंजाइम, but it is not tightly bound to the apoenzyme. So the coenzymes are those cofactors which are organic compounds, but their association with the apoenzyme is transient, short-lived. And this interaction occurs only during the course of reaction. After the reaction, this coenzyme dissociates with the main enzyme. So such cofactors are called as cofactors. लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, peroxidase के साथ हीम कंबाइंड है हमेशा. हीमोग्लोबिन के साथ हीम
अटैच्ड है हमेशा, ये दोनों अलग नहीं हो रहे हैं, इसके साथ अटैच्ड है, तो ये हो गया प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइप ऑफ कोफैक्टर। कोएंजाइम टाइप ऑफ कोफैक्टर इज the organic compound dissociates after the reaction. So this type of cofactor is only transiently bound to the enzyme for a short period of time. So in that case it is called as coenzyme. समझ में आ रहा है? एक और अंतर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का संबंध एपोएंजाइम के साथ हमेशा हमेशा के लिए है, लेकिन कोएंजाइम डिसोसिएट हो जाते हैं, और ये कोएंजाइम और भी दूसरे तरह के एंजाइम्स के कोफैक्टर हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोएंजाइम ए का हम आपको बताए थे, चर्चा किए थे। यह कोएंजाइम ए बहुत सारे एंजाइम का कोफैक्टर है। ओके, तो कोफैक्टर कॉमन, एंजाइम्स डिफरेंट। तो इन कोएंजाइम्स में आप पाओगे कि बहुत सारे विटामिन जो हमारे लिए नेसेसरी है, वो इसलिए नेसेसरी है, यह इन कोएंजाइम्स के पार्ट, जैसे पेंटोथेनिक एसिड इट्स पार्ट ऑफ ए कोएंजाइम ए। ओके, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जो बहुत सारे विटामिन हैं, उसमें से बहुत सारे विटामिन कोफैक्टर्स, कोएंजाइम्स हैं, जिसको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस रिएक्शंस को होना जरूरी है बॉडी में, इसलिए उन विटामिन की हमें आवश्यकता है टू कैरी फॉरवर्ड दिस रिएक्शंस। अदरवाइज deficiency of those enzymes will occur, and because of that deficiency of those coenzymes will occur, and in the absence of coenzyme the enzyme will not properly function, and this will lead to a deficiency disease. ओके, एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है आपके बुक में, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी। एनएडी भी कोएंजाइम है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट है, ये कोएंजाइम भी है, कह रहे हैं एनएडी एंड एनएडीपी, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। यह कोएंजाइम है कैटालिटिक पाथवे का, और यह है एनाबॉलिक रिएक्शंस में आप पाओगे एनएडीपी और एनएडीपीएच। एनएडीपी और एनएडीपीएच यह ऑक्सीडेशन रिडक्शन एजेंट आप पाओगे एनाबॉलिक रिएक्शंस में, एनाबॉलिक पाथवेज में, और एनएडी का एनएडीएच में इंटर कन्वर्जन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। दिस टाइप ऑफ कोएंजाइम you will find in catabolic pathway reactions। दोनों का आप चर्चा कर दिया यहाँ पर। एनएडी, वेदर एनएडी हो या एनएडीपी हो, यह बनते हैं आपके किससे? विटामिन नियासिन से। ये बी कॉम्प्लेक्स का विटामिन है नियासिन, शायद B4 है या B6 है, देख लेंगे। ओके, पेंटोथेनिक एसिड B5, ये सब कोएंजाइम्स हैं। इसके अलावा एक तीसरा तरह का कोफैक्टर जिसको मेटल आयंस कहते हैं, वह भी, मेटल आयंस भी कोफैक्टर्स हैं, का काम करते हैं। तो यहाँ पर कोफैक्टर्स क्या हो गए? इनऑर्गेनिक। पहले दो केसेज में क्या देख रहे थे? कोफैक्टर्स क्या है? यहाँ पर कोफैक्टर्स ऑर्गेनिक है।
ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पहले वाले में ऑर्गेनिक कंपाउंड परमानेंटली पार्ट था एंजाइम का, दूसरे वाले में सिर्फ रिएक्शन के दौरान एंजाइम का पार्ट रहता है, और तीसरा वाला इनऑर्गेनिक है। क्या है? इनऑर्गेनिक कोफैक्टर आर द मेटल आयंस। These metal ions during the course of the reaction form coordination compounds. आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप लोग। They form coordination bonds. Okay? Coordination bonds किनके साथ? These metal ions form, पूरा लिखना, metal ions form coordination bonds with, किसके साथ? With the side chains of amino acids present in the active site of the enzyme. समझी मतलब? एंजाइम के पॉकेट में जिन अमाइनो एसिड से उनका पॉकेट बना हुआ है, उन अमाइनो एसिड के जो साइड चेन है आर, उन साइड चेन के साथ यह मेटल आयंस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक है? They form coordination bonds. These metal ions form coordination bonds with the side chains of the active site. Okay. And at the same time, they form coordination bonds with the substrate. Okay. तो ये क्या कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक आयन है, इट इज फॉर्मिंग coordination bonds with the side chains present in the active site. ये R1 R2 ये हो गया आपका एंजाइम के अंदर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और यहां अब सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट में आ गया, तो इट विल फॉर्म द कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विथ सबस्ट्रेट ऑल्सो। यह ऐसा तभी संभव है जब मेटल आयंस हो एक्टिव साइट। ओके, सो दे फॉर्म at the same time they form coordination bonds with the substrate too. Okay. जैसे मैग्नीशियम आयन, this cofactor is required for polymerase activity. All polymerases need this metal ion. Zinc ion is required by carboxypeptidase enzyme. यानी ये पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने वाला एंजाइम है, प्रोटीन को डिग्रेड करने वाला, बट प्रोटीन को यह कार्बोक्सी टर्मिनल से डिग्रेड करेगा एंजाइम, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ओके, so these two are examples of the enzymes which require inorganic cofactor in the form of metal ions. These cofactors, all these three types of cofactors are very crucial for the
enzyme's catalytic activity. If these cofactors are removed, catalytic activity is also lost from the enzyme. It means that these cofactors are essential and it plays a crucial role in the catalytic activity of these type of enzymes which require cofactor for its activity. Okay. So here I am completing this chapter. This chapter is completed. Tomorrow we will discuss the question answers of this chapter. कुछ पूछना है आपको?